folks, happy Dussehra. Now let's start with the news that never was. The news that never made it to the front pages or it actually didn't matter. And the biggest one of them was this. Nada likely to get second term as BJP chief. He was in the middle pages, hit somewhere, right? Even Anjana Kashyap, one of the Godi media person, took off at Turncoat, Bhatia. I don't know how these people turn coat, one is Samajwadi Party Bhatia, or the Congress, Jyoti or Jatin Prasada. How they flip RPNC, how they flip from being by one case secular, the other is Samajwadi Party to core and defend the Hindutva, I have no idea, but they do so. With kind of ease. But Nada was in the center pages and he redefines Kathputli or puppet or somebody whose strings are being pulled from the back. In fact, he doesn't know any decision that the two people make, two guys make, the Home Minister and the Prime Minister. I'm quite sure I'm told that when the entire cabinet of Gujarat vanished, he had absolutely no clue. He was out there in Bihar. I mean, I don't know what he was doing, but he had no idea. Right? So where's the democracy? I'll tell you where the democracy in the party is. In a party democracy, it's flying in the sky. It's right in Sierra. Jyoti Scindia back in the scene. Scindia hails democratization of air service under Modi government. Get the irony of that. Democratization of air services. These are the same guys when he said कि हवाई चप्पल पहनने वाले अब हवाई जहाज में उड़ेंगे. And apparently इस टर्न कोड के हवाई जहाज उड़ने वाले अब वो वंदे ट्रेन में जाएंगे क्योंकि वंदे ट्रेन बहुत ही साइलेंट है. हम बातचीत कर सकते हैं. Oh God, that's bloody new to me. Oh, anyway, so there is definitely some democratization going on as far as Scindia is concerned, and that's in the air, right? What's making the news? PM Modi launches 5G, calls it step in new era. Telecom CEOs term advent of 5G a transformational event for the country. Let me just tell you folks, there are at least 2 or 3 dozen countries, half of Africa like Kenya, Lesotho, Botswana, who launched 5G 4-5 months ago. We are already 3 or 4 months late. Ask yourself that. This is no transformation. Can you imagine 4G is not available to most of the people? What are we going to do with 5G, guys? But then when this comes on, this, folks, is making the news. When Rahul Gandhi is out there, जब वो खड़े हुए हैं और अपना भाषण दे रहे हैं, बारिश हो रही है. Important cheese for people who've not seen it or it's been kept away from the mainline media is this. He's standing there. Not only is standing there through the rain, there is no chhata, but there is a bead and people actually watching it. Unlike the empty stadiums or the excuses made when Prime Minister didn't reach Himachal Pradesh, didn't reach Punjab because of inclement weather, didn't reach Uttar Pradesh because of inclement weather. You will all remember that. These are guys, they actually took the chairs and put it on their head for protection, but they stood. That, folks, is what's making news. Is this going to turn into a historic Padyatra, a Sanskritic Padyatra? Nobody knows. But I am quite sure it's having an impact. नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इस यात्रा के जरिए वो खूब चर्चाओं में बने हुए हैं। ये यात्रा उनकी 25वें दिन कर्नाटक पहुंची। ये यात्रा आपको बता दें कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जानी है और अब ये 25वें दिन 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंच चुकी है। और कल जब कर्नाटक के मैसूर में राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने एक देर शाम एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मूसलाधार बारिश होने लगी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने अपना भाषण बंद नहीं किया और ना ही वो अपनी जगह से हटे, ना ही उन्होंने बोलना बंद किया, ना ही उन्होंने किसी तरह के छाते का इस्तेमाल किया। वो लगातार बोलते रहे और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसी बारिश में उनको सुनने वाले भी लगातार डटे रहे, वो वहां से हटे नहीं और लगातार राहुल गांधी को सुनते रहे। उन्होंने भी अपना भाषण छोटा न करते हुए चालू रखा और वो बोलते रहे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को ना तो बारिश रोक सकती है, ना तो गर्मी, ना ही धूप किसी भी तरह से इस यात्रा को रोक नहीं सकती और ये यात्रा कन्याकुमारी से निकली और कश्मीर तक जाके रहेगी। ये यात्रा भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है, उनकी हिंसक भावनाओं के खिलाफ है। इस तरह से राहुल गांधी ने लगातार इस जनसभा को संबोधित किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया जा रहा है और यही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इससे पीछे नहीं है। वो भी राहुल गांधी के इस वीडियो को दिखाने में पीछे नहीं रही। हर तरह से ये वीडियो शेयर किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर। ये वीडियो खूब ट्रेंडिंग में भी है और खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए। So actually, what captured the mainline media was this drama about the presidential candidates for the Congress. The right Congress, by doing this, whether it's a Kathputli, what do you call that, president or whatever, it's still a democratic process because Shashi Tharoor now is going to be fighting Karge. But the way Gehlot came in, then Digvijay came in, then Shashi Tharoor, then Karge, you almost knew. I had my gut feel, and you can hear Sanjay Sharma say the same thing. This was orchestrated at the top level, extremely well, because Congress stayed in the news, and Modi had to run around with Vande Mataram pictures, had to go run around that silly picnic with an ambulance. Can you imagine that? I mean, an ambulance going by and the patrols are making it, oh, the guys are making it, what great, Prime Minister, he let a dying man go. Let's go and do some tehqiqat and find out who was in the damn ambulance, or just empty one running past you, right to the 4-lane highway, man. Anyway, this was done
wonderfully because the Congress stayed in the news, and you all know it was a plan because otherwise it cannot be a coincidence that the day Kharge enters, hear this, the day Rahul Gandhi enters Karnataka, or the Yatra enters Karnataka, is the day Kharge's name pops up, and he is from a Dalit face from Karnataka. So go figure that out. Who got the better one this time of Godi media? Congress did. So what was the drama that was going? Can be both Congress chief and can be both chief and CM says Gehlot. Digvijay disagrees. Side sold resolution. Congress signals Rahul may not contest. Gehlot and Tharoor begin groundwork. Gehlot agrees to run for Congress president, step down as Rajasthan CM. And this was not true. He was not going to step down as Rajasthan CM until he was sure that he was going to become president. Gehlot's sudden CLP meet takes everyone by surprise. 3 more Congress state units now back Rahul for chief's post. Total now 11. Gehlot's defiance leaves Congress brass fuming. Presidency plans under cloud. Gehlot camp boycott gross indisciplines Congress. All front pages, right? Why things are falling apart in Congress and center can't hold. Like Rahul doesn't care. It says Yatra, folks. And the more you think about why the center can't hold or Rajasthan can't hold, you got a problem in your hands. Gehlot meets Sonia, pulls out of president race. Congress circus runs non-stop. But the circus got full-page news, guys, of equal time than everybody else. Congress poll triggers crisis in Jaipur. Hunt on for safe presidential phase. G23 springs a surprise full support for Kharge, token wishes to Tharoor. Gehlot among top leaders behind Kharge. Tharoor says vote for change. Congress leadership sends clear signal as Kharge stands for top post versus Tharoor. Sonia to join Congress rally in Karnataka on October 6th. And the same day, everybody was cribbing why has there not been a president announced for the UP. And guess what they pulled out? Ex-BSP MP Brijlal Khabri is UP Congress chief. And he's a Dalit leader, right? It's Kharge versus Tharoor for Congress presidential elections. Completely orchestrated. Godi media got a slap on its face, got taken for a ride, and so did the PMO and the guy who hangs around there and dictates the news. Cheers. जन्मदिन के मौके पर रंग में भंग डालने की तैयारी कई दिनों से लोग कर रहे थे। हर साल वाला मेन्यू इस बार भी रिपीट कर दिया गया। हजारों ट्वीट करके उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर लोग मनाने लगे। टॉप ट्रेंडिंग में आ गया। एक तरफ चीता मोदी जी, एक तरफ ये। उधर मोदी जी और मीडिया वाले चीते के स्वागत में मगन थे। देखो देखो चीता आया का माहौल बनाने में जुटे थे। और इधर ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा मोदी आया बेरोजगारी लाया। हजारों लोगों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हैशटैग के साथ भी ट्वीट करके मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ में बेरोजगारी के तमाम आंकड़े भी चिपका दिए गए। वैसे जन्मदिन के मौके पर ये सब आंकड़े देकर मैं तो मानता हूं मजाक किरकिरा करना गलत बात है। भाई प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने कोई प्लानिंग की होगी, लेकिन लोग बात कहां आते हैं? वैसे भी विपक्ष का तो काम ही यही है। इधर मोदी जी जंगल में लग रहा है कि खड़गे साहब को अशोक गहलोत के विवाद के बाद उनका नाम कटने के लिए लाया गया, लेकिन ये सारी प्लानिंग थी। सोचिए, शुक्रवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक में प्रवेश करती है। और ऐसा नहीं है कि इस यात्रा के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया गया, ये कार्यक्रम महीनों पहले बना था। लेकिन जिस दिन यात्रा कर्नाटक में एंट्री करती है, उसी दिन अध्यक्ष के चुनाव में खड़गे की एंट्री होती है। क्या यह संयोग है? निश्चित तौर पर नहीं। सारी की सारी स्क्रिप्ट पहले से लिखी थी, बहुत शानदार लिखी थी। So you know this yatra is having a creating major waves, where you first have Mohan Bhagwat running to a masjid in Delhi, right, to meet the imams. The imams are kissing up to him for whatever reason. And the second is this: Nitin Gadkari has also come out very strongly and spoken about rich India, that India is rich, but the people are poor. He's spoken about the difference in income between the richest and the poor. He's spoken about poor. He's spoken about poverty. He's spoken about unemployment. And guess who else he's come out and supported? And you know that the two guys are in trouble. RSS General Secretary flags poverty, jobs, inequality. So the Yatra is definitely having some trouble. And what about Rupani? Rupani resigned as CM after being told only the previous night by party. This is what I mean when you're going to start seeing Gujarat. Why did they have to do that? It has to be anti-incumbency. He's told the day before. Poor fellow has not said a word till now, right? But this is where all Godbale and all these guys are beginning to worry, right? Retail prices of atta rise by 19%, rice by 8% in last year. Look at this other one, which is going to have a major impact on the farming community. Fodder inflation at 9-year high, late rains, crop damage, deepened crisis, right? And then you hear this, government saw fodder crisis coming over 2 years ago, but plans remained on paper. Like everything that Modi announces, everything stays on paper. Big jumlas, big announcements, right? Rupee dives to new low, D Street mirrors fall in global markets, and this is going to continue, even though there was a flip back on Friday, but I think the stress is on, right? At 80.86, rupee closes beyond $80 for first time. And here's the Prime Minister, if you hear his videos of 2014, the center is doing nothing and basically a declining rupee, we are lower than Pakistan, lower than whatever. If a declining rupee basically means a declining prestige of the country. I'm not sure where we're going now, right? Rupee breaches 81, policy challenge, let it find its value to or burn forex, hike rates. Challenging time for a reasonably, I think, clueless finance minister and an RBI governor. Challenging times for us all because of that. Cheers. लगता ऐसा है गोदी मीडिया के चैनल देखकर कि जहां कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के मुखालिफ खड़े हैं, लेकिन शायद उसके भीतर कोई जाए तो पता लगे इस खेल में भी
एक तरफा रिपोर्टिंग है। वो एक तरफा रिपोर्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कहने पे की जाती है, जिसके आदमी की भी अब शिनाख्त अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। तो अगर आप देखें पिछले 15 दिन जब भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे शबाब पर आ रही थी, भीड़ बढ़ रही थी, उस वक्त गोदी मीडिया और सरकार ने मिलकर कुछ ऐसा खेल किया जो शायद 70 साल में कम देखा गया होगा। अब सच यह है कि देश में जो गैर भाजपा सरकारें हैं प्रदेशों में, उन सरकारों को कैसे कमज़ोर करना है, कैसे गिरा देना है, तोड़ देना है, उसमें फूट डाल देना है, ये काम आज के दौर में बीजेपी से कहीं ज़्यादा गोदी मीडिया कर रही है। स्क्रिप्ट लिखने का खेल है। ये स्क्रिप्ट कौन लिखता है? कितने लोग हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जो निर्देश देते हैं मीडिया को, और कैसे ये पूरा ऑपरेशन होता है जहां पर गोदी मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग करती है, एक ऐसे हालात पैदा कर देती है स्क्रीन में, अखबारों में, जहां विपक्ष पूरी तरह से बिखरने लगता है। और मुझे लगता है कि इससे पहले कि मैं इस खबर में बड़ा खुलासा करूं और वो जो नकाब है हटाऊं गोदी मीडिया से, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल कभी कभी सच बोलते हैं जब वो बहुत हिम्मत करते हैं, या यूं कहें जब उन पर गुजरती है तो उनकी सुबह से सच निकलता है। तो जान लेते हैं उस शख्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जिसे कहा जाता है कि आज की तारीख में ये देश के सबसे बड़े संपादक हैं और हर चैनल की, हर अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी इनके हाथ में। सुनिए केजरीवाल को, कौन है वो आदमी। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो, क्या धमकियां दे रहे हैं वो। ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे, फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचो। So when all else fails, we are back to crackdowns, ED, CBI, and this time it's over 100 held a nationwide crackdown on PFI, Shah chairs high-level meeting. Now, ordinarily I would say anybody who's against India or is trying to create havoc in India, of any religion, whether it is the Khalistan from the Sikhs or this PFI for the Muslims, or in more cases the right-wing Hindu Mahasabha, everybody's got to go. But the timing is such that one worries, right? Working president of Congress and poll-bound HP joins BJP. Like I said, that continues. Dalit boy beaten by teacher dies in UP protest held. Police vehicle set on a fire, and this is after Ankita Bhandari, who was killed in Uttarakhand. Free rations plan extension to cost center 44,762 crores. They continue giving free rations. We don't have anything else. Don't be mute witness to hate speech. SC tells government can't use hate speech to drive TV ratings as SC. But I have not seen any change happening to any of the Godi media, except the fact that now they've been asked for a character certificate. Go figure. All these guys are kissed the feet, kissed the floor these two have walked on, and now they've been asked to get a character certificate. SC flags TV channel chief medium of hate speech may lay down guidelines. No criminality found in Radia tape. CBI to his SC, and today I'm seeing that ED is again going after 2G in DMK bastion in Tamil Nadu. Right? I don't know. Dussehra rally Shinde to be star. BJP netas kept out. This is interesting. It's first Nitish BJP ballot battle since split. This is the by-elections that are coming up. This is going to be really interesting. And here this what Vijay Gokhale has to write about Xi. China caught in Xi's thought. He says the glorification of Xi, though, is evident all over China. Even the redoubtable Deng is reduced to playing a bit role in the party's ideological journey. Xi is being portrayed as a leader that has contemporized Marxism to suit the special conditions in the 21st century. His objective might be to become practitioner-in-chief of Marxism in the 21st century in the manner similar to Lenin's role in the 20th century. Whether such efforts will ensure permanency of his contributions is another matter. Now, what he's saying for Xi, folks, doesn't it sing the same as our supreme leader? Isn't he trying the same thing under the garb of democracy? You tell me, folks. 3 cheers and Jai Hind. 30 सितंबर को गुजरात के भावनगर की रैली में उन्होंने एक जुमला फेंका कि हमने बड़े बड़े विकास प्रचार पर भारी भरकम पैसा बर्बाद किए बिना ही किए। अलग अलग आरटीआई से मिली सूचनाएं उनके इस झूठ की पोल खोल देती हैं। वो सूचनाएं बताती हैं कि मोदी असल में प्रचार के रसिया हैं। मिसाल के तौर पर एक आरटीआई रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच जब पूरा देश थमा हुआ था, कोई काम नहीं हो रहा था, सब घरों में बैठे हुए थे, तब भी प्रचारक प्रधानमंत्री प्रचार पर पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। इस दौरान मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर 212 करोड़ रुपए लुटाए। जरा सोच कर देखिए, कोरोना के भयावह दौर में जब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत एक गरीब परिवार को सिर्फ 500 रुपए महीने में दिए जा रहे थे, उसी दौर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा मोदी का चेहरा चमकाने पर उड़ाया जा रहा था। बीबीसी में ट्रंप के प्रचार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आरटीआई से मिली एक और जानकारी की बात करते हैं। उस आरटीआई के जवाब के आधार पर 16 फरवरी 2019 को एक रिपोर्ट छपती है तमाम अखबारों में। उस रिपोर्ट पर हंगामा मच जाता है। इसमें कहा जाता है कि अपने आप को सबसे अच्छी और सबसे सच्ची पार्टी बताने वाली भाजपा सरकार के 4 साल में ही विज्ञापन पर खर्च की गई राशि यूपीए के 10 साल के खर्चे के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा पहुंच चुकी थी।
देखिए कि यूपीए ने अपने 10 साल के कार्यकाल में विज्ञापनों पर औसतन 504 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए थे। वहीं मोदी सरकार में हर साल औसतन 1202 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। मोदी सरकार ने 4.5 सालों में विज्ञापन पर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले।